Hi guys, today I will tell you how to handle the iframes in Selenium. So in this video I will cover that handling iframes using Selenium WebDriver and first of all we should learn what is iframe. So iframe is a HTML document embedded inside an HTML document. Iframe is defined by iframe tag and with this tag you can identify an iframe while inspecting the HTML tree. Just like if you want to enter first name in this text box and this is inside the iframe, then you cannot insert the text directly. You have to um, switch to that iframe, and to know that it is in iframe, just right click and check that it's inside iframe or not. Just inspect element and just click here and see there is a iframe tag should be there. See this iframe. So these all text box are inside the iframe tag. Okay, so if you want to enter, then first we will have to switch inside that iframe. So we have three overloaded methods provided by Selenium. Switch to frame. This is integer frame number, means it's an index number. Index starts from 0. So if there are three iframes in our application, then it is first is 0. So we will have to enter 0, then 1, then 2. Okay, so pass the frame index and driver will switch to that frame. Okay, and second overloaded method is frame string. We will have to pass the string, means frame name. Okay, or id, something name or id, frame name or id. Okay, pass the frame element name or id and driver will switch to that frame. Okay, and the last one is web element. Okay, switch to dot frame and we have to pass web elements. Okay, pass the frame web element and driver will switch to that frame. So start करते हैं. If you want to enter something in the first name, then first you will have to switch this frame. Okay, so first मैं आपको बताऊंगा first वाला overloaded method. Okay, it's a integer value, so it's an index. So let's see. Okay, it's a code. It's a demo website, so this is maximize. After maximize, I will have to switch into the iframe. Okay, so we have driver provides a class driver dot switch to dot frame. Okay, so here you can see we have three frame overloaded frame methods. Okay, first integer argument, second one is string argument, third one is web element argument. So in this string we have to pass 0, or if it is 1, then 1. If 2, then we will have to pass 2. Okay, so it is I guess it's first. So first should be 0, first iframe, you can see. Okay, so now find the expert. First name, we have name, first name. Just copy this. Driver dot find element by dot name. Just press the name dot send keys, first name, driver. Okay, so if you want to click before switching inside that iframe, what will happen? See, let's execute.
see, no such element, unable to locate element because it's in frame. So it will not means ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा और आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं एक्स पाथ तो नहीं कर पा रहा हूँ, एक्स पाथ तो मैं सही है, एलिमेंट भी फाइंड हो रहा है बट मैं एंटर नहीं कर पा रहा हूँ और मेरे पास एरर आ रही है नो सच एलिमेंट। तो उसके लिए आपको ध्यान से इंस्पेक्ट एलिमेंट करके देखना होगा कि इसमें कहीं आईफ्रेम के अंदर तो नहीं है ये एलिमेंट। तो यहाँ पे ये आईफ्रेम के अंदर है, तो मुझे आईफ्रेम में पहले स्विच करना होगा। तो मैं इसको कमेंट हटा देता हूँ इसका। ओके, लेट्स सी, लेट्स ट्राई टू एग्जीक्यूट। सी फन सेंटर। ओके, सो दोस्तों एक और बात है, अगर मुझे यहाँ पे मैंने आईफ्रेम में स्विच कर लिया और अगर मुझे आईफ्रेम 2 के अंदर जहाँ पे वैल्यू मुझे गेट करनी है तो मैं डायरेक्ट गेट नहीं कर सकता। इसके लिए मुझे वापस से फ्रेम से बाहर निकलना होगा और फिर से सेकंड वाले फ्रेम में मुझे स्विच करना होगा। तो बाहर निकलने के लिए डायरेक्ट मैं कभी नहीं कर सकता, डायरेक्ट अपन एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम पे स्विच नहीं कर सकते हैं। इसके लिए मुझे वापस से अपनी मेन फ्रेम या मेन विंडो पे जाना होगा देन we can move to another frame. Okay, so driver we default content method, so driver dot switch to dot default content. Okay, then first learn that other older method which is string name or id. Okay, so this frame name, any id or not? Let's see, this is iframe. Okay, so we have id. Let's copy that id, then just paste here. This is the id, that is a string argument. Okay, let's see. ओके, फर्स्ट नेम इज एंटर्ड। ओके, तो ये आईडी भी अपना हो गया है। आईडी से भी फ्रेम स्विच कर सकते हैं। और देखो वेब एलिमेंट, अब मुझे इस ओवरलेड मेथड में क्या करना है, वेब एलिमेंट पास करना है। तो मुझे इस आईफ्रेम का वेब एलिमेंट फाइंड करना होगा। ओके, वेब एलिमेंट कैन बी जस्ट लाइक अगर यहाँ पे आईडी है तो अपन को जरूरत नहीं है फाइंड करने की, बट एज ए प्रैक्टिस मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, वेब एलिमेंट frame 1 equal to java dot find element by dot id, and what is the id, iframe 1. Okay, and switch to web element means frame 1. Okay, let's see. So we have covered all three overloaded methods. Okay, let's see it will work or not. सो गाइस काम कर रहा है, फर्स्ट नेम इसने कर दिया। अब अपन नेक्स्ट पे मूव होते हैं। ठीक है, तीनों ओवरलोडेड मेथड अपन ने कर लिए हैं। अब मैं कुछ ट्रिकी जो यहाँ पे इंटरव्यू पे क्वेश्चन होता है वो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर वन
वन आई फ्रेम से अगर सेकंड आई फ्रेम में स्विच करना है तो अपन डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, उसके लिए अपन को फिर से डिफ़ॉल्ट कंटेंट पे जाना होगा। तो डॉट स्विच डॉट डिफ़ॉल्ट कंटेंट। ओके, अब मुझे इस वाले की यहाँ पे आई फ्रेम टेक्स्ट मुझे गेट करना है। ओके, जस्ट लाइक जस्ट let's create some XPath. H2 text or contains text. What is text? Explain. Okay, just copy the text path and just print that, or just store that string in a string type variable string text into driver dot find element by dot xpath dot get text. Okay, get text is a method to get the text from which is displayed in website. Okay, so just and just add the text. Okay, so अगर मैं यहाँ पे डिफॉल्ट कंटेंट नहीं करता हूँ, देखना है क्या एरर आती है। मैं डायरेक्ट एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम पे स्विच हो रहा हूँ। ठीक है, इसने एंटर कर दिया। सेकंड पे देखो, नो सच एलिमेंट, जो कि पहले आ रही थी, ये एलिमेंट इसको फाइंड नहीं कर पाया, नहीं मिला इसको एलिमेंट। क्यों? क्योंकि अपन ने ये सेकंड उस पर स्विच नहीं करवाया। डिफॉल्ट कंटेंट करेंगे, चलो डिफॉल्ट कंटेंट नहीं करते हैं, डायरेक्ट स्विच करते हैं, तब देख क्या होता है। तो ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट फ्रेम। okay, let's see what is id that frame. See, this is iframe 2. This needs to paste. Okay, let's try to switch without doing content. वैसे बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है इंटरव्यू के लिए कि फ्रेम से दूसरे फ्रेम में अपन डायरेक्ट स्विच हो सकते हैं, तो नहीं कर सकते हैं स्विच, उनको डिफॉल्ट कंटेंट करना होगा। अब देखो यहाँ पे क्या आया कि नो फ्रेम एलिमेंट फाउंड बाय नेम और आईडी iframe 2। ठीक है, क्योंकि अपन को डिफॉल्ट कंटेंट यहाँ पे करना जरूरी है। अब मैं डिफॉल्ट कंटेंट करके इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। ठीक है, बट ये बहुत ही ज़्यादा मतलब ये स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, तो आगे की प्रोग्रामिंग एक्सटेंड कर सकते हैं। कुछ भी आप एक्सप्लोर करो, कुछ भी करो, लेकिन ये जो टॉपिक है ये स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। देखो हो गया, वहाँ पे एंटर कर दिया इसने, फर्स्ट नेम में राघव एंटर कर दिया, और सेकंड में यहाँ की वैल्यू गेट करवाई थी अपन ने, तो ये यहाँ पे इसने प्रिंट कर दिया। ठीक है गाइस, तो अपन ने स्विच करना सीख लिया, और एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में नहीं जा सकते, इसलिए डिफॉल्ट कंटेंट करना होगा। अगर फिर से मुझे फ्रेम 1 में जाना है
फिर से डिफ़ॉल्ट कंटेंट करके से मुझे फ्रेम 1 में होना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने देखा कि ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट फ्रेम, और फ्रेम क्या है, वी हैव 3 ओवरलोडेड मेथड्स। ओके गाइस, सो इंटरप्रिटेशन तो यही बेसिकली बनता है कि कैसे स्विच करते हैं एक फ्रेम से आप दूसरे फ्रेम के एलिमेंट पे क्लिक कैसे करवाओगे। तो डिफ़ॉल्ट कंटेंट अपन को करना होगा, उसके बाद ही आप एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में स्विच कर सकते हो। ठीक है गाइस, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ यू लाइक इट देन प्लीज लाइक और प्लीज सब्सक्राइब चैनल। सो थैंक यू।